नमस्कार, मैं दीपलिना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिनको इनवाइट किया है, द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन. He is the superstar of Assamese film industry, ruling the industry since years. So let's welcome Mr. Nipon Goswami. Welcome, sir, to our show. Thank you, namaskar. Sir, tell us about your childhood, your birthplace, your schooling, where have you done your graduation, all about your personal details. Childhood is I have to go back to a long back. It was in the year 1944 I was born. Long back. The place where I born was Tezpur. It is known as Tezpur. It's a famous place from where so many famous people has come out in artistic way, in artist field, cultural field. There's so many fields. Including you also. I don't count myself as a No, we know that. Everybody knows that. You're already a superstar. Anyway, my respected persons were Honi Sharma, Vishnu Prasad Rava, my father Prasar Goswami, all were from Tezpur. So I was born and brought up there at Tezpur and got my education at a school which was known as Kolibari Nimna Bunyadi Primary School. It was very nearby to my house. You'll be surprised to know that at our time, until and unless you attain 5 years, you won't get the admission in the school. You have done lots of struggle. We had to struggle a lot. When I attained 5 years, then I got admitted to that school. And from then onwards, at the age of, say, 7, I started playing stage plays. Stage plays. I started playing acting on stage. I have a question for that and regarding your acting. So you just continue with where you have done your graduation. Then I shifted to Government High School, Tezpur Government High School. From there I passed out the matriculation examination. Huh. Then I got my admission at Dorang College at Tezpur, from where I got my graduation under the Guwahati University. Like that way, I have come to that place. So the very significant question I'm going to ask you is that how the acting thing happened in your life? ये बड़े मजे की बात है. जब मैं छोटा सा था, तब I used to copy, the people's how they work, how they behave, how they talk. It fascinated me like anything. बचपन से ही आप बचपन से मैं नकल उतारता हूँ. मेरे पिताजी का, अंकल का, मेरी मदर का, करते हैं. सभी घर के सभी सदस्यों का I was just copying them. तो बचपन से मैं देखते आ रहा था इन लोगों का एक्टिंग. Honi Sharma, Vishnu Rava, Prasar Goswami, my father. People belong to the same place. Same place. There is a theatre hall called Ban Theatre Hall. It's a very, very famous, very old theatre hall. अभी भी है वो? अभी भी है. Still it is there. उन theatre stage में इन लोग सभी लोग एक्टिंग करते थे. जब मैं छोटा सा था, when I was a child, I used to see all those dramas and all the functions. From then only, in my subconscious mind, that I should also do acting. Okay. In that way, I got fascinated to acting. And from my childhood, I started enacting my father's behavior, my uncle's behavior, like that only. You have got the environment from your home? Yeah. It was surprising. I still am surprised that I got the atmosphere where the artistic things were there. In my family, most of the family members were artists. My uncle was artist. My father was artist. My mother was a singer. She could play violin. She could play sitar. She could sing very well. In that atmosphere, I brought up.
And your son is also an actor. Yeah, now he has become an actor. He has, he liked acting, I don't know why. He told me that, Papa, I am very much interested in doing acting. Okay. So, well, first you get your admission, first you get your education, then when time comes, you just start. Well, he is blessed to be son of a superstar like you. I don't know. I don't count myself. I don't count myself as a superstar. You don't have to we know that. Artist, simple and artist. In that way, I am doing like that. हाँ. सर, आपने बताया बचपन से ही आप फैसिनेटेड हुए थे उनके प्लेस देखकर, थिएटर्स देखकर, ड्रामास देखकर, तो आपने भी आई थिंक चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से डेब्यू किया है सिनेमा पे. जरूर मैंने किया था इन द ईयर 1957. सर, टेल अस अबाउट एक्सपीरियंस बीइंग एन चाइल्ड आर्टिस्ट. चाइल्ड आर्टिस्ट एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊं. In 1957, there was a film called Purification was started in Tezpur. The director of that film was Pani Sharma, and my father acted the main role of that film. When Pani Sharma, generally he used to come to my place, I mean my father's place. He used to talk to my father regarding cultural things and all. So luckily, I heard one day they were discussing about a film. They wanted to make a film by the name of Purification. From then onwards, I started thinking that why don't I approach Pani Sharma to get me in that film. Oh, आपने individually approach किया था. Oh yes. Wow, yes. That's At that very time I was very sporty. silent. I mean, I was just 8 years old, 8 years old. Then I started requesting Pani Sharma. We used to call Pani Sharma Bolinda. He was known famously in Bolinda. So I started requesting him, Bolinda, just get me a role in your film. I would like to act in your film. One day he annoyed with my request and everything. He said, okay, you come to such and such place, we are doing some shooting, you come there. Accordingly, I went to this spot, it was very nearby to my house. I have gone there and met Bolinda and said, well, as you asked me, I have come. Well, okay, then you come and stand here, put off your pant and sabla. Why? How can I do that? Don't you get, have not bring any gamusa or like that? Yeah, I have brought one gamusa. Wear that gamusa. Okay. So accordingly, I did that thing, I wear the gamusa. And Bolinda said that when I ask you to run, you just run. Don't look if either इधर मत देखो, बस दौड़ो. Okay. तो accordingly मैं खड़ा था उनके पास. उन्होंने बोला कि चलो निपन, तुम रेडी हो ना? तो Bolinda ने बोला start sound, start camera. That was the first time I have heard these words. Camera, I have seen for the first time the camera, the sound, the reflector, the lights. You were not afraid? Not at all. Great. That was by the blessings of God, I was so free. I didn't care about all these things. तो Bolinda ने बोला चलो मैं जब तुमको कहूँगा कि दौड़ दो, तुम दौड़ो, इधर उधर मत देखो. पर Bolinda बोला चल दौड़. मैं लगा दौड़. दौड़ते दौड़ते एक जगह आया जहाँ एक लकड़ी सा जैसा पड़ा हुआ था. वहाँ जाके मैं ठोकरा है. ठोकरा खाने के बाद में गिर पड़ा. अच्छा. गिर पड़ने के बाद मेरा गमछा जो था ना निकल पड़ा. खुल गया था. That was funny. It was very funny. Somehow वो गमछा को हाथ से पकड़ के मैं वो shot complete किया. It was a okay shot. It was not a one take okay. One take okay. Wow, great. You confidence. Deserve a clap for this. Luckily it was okay. Our confidence grew up. Confidence पे आ गया कि मैं कर सकूँगा. That was my beginning of the acting career in film. Actually, thanks to that child curiosity of yours, actually today we have got you for that curiosity. आपने खुद approach किया था वो curiosity के लिए आज शायद
हमारी इंडस्ट्री को निपॉन गोस्वामी के जैसे इतने बड़े हस्ती हमको मिले हैं. But anyways, maybe. Moving on to our next question. So there are lots and lots of people who consider you as a role model. तो मैं actually personally जानना चाहूँगी, who is your role model? Who has been your inspiration? My father was my inspiration, my whole family. Father used to help me a lot. He encouraged me. कहते थे चलो तो आगे बढ़ो, करते जाओ. एक्टिंग तो करना चाहते हो तो करो, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम एक्टिंग कर सको. तो उसके हिसाब से, उसके दुआ से, उसके आशीर्वाद से मैं एक्टिंग में आगे बढ़ा और तब से मैं एक्टिंग करियर शुरू किया. अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन ऑफ निपॉन गोस्वामी सर इज योर फादर. माय फादर. इन वन वर्ड. माय फादर. वाह, ग्रेट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, अगर मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ तो एक अगर नाम नहीं लूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा. डॉक्टर बेस बोरवा. Sir, I want to know, we have heard that after the tremendous success of Dr. It was a fabulous movie, it was a fantastic movie, it was a super duper hit super duper bombastic movie. Days, at that time. So, after that post-success, I have heard you have got many offers from Bollywood. My God, Bollywood I have acted in 3-4 movies in Hindi. Can we know the names of that movie? दो अंजन होता, अमिताभ बच्चन रखा, जोगू, शत्रुघ्न सिन्हा, लीना चंद्रवरकर, Carl Sandhya, like that 3-4 movies I have acted. Then one called Prabhat Mukherjee, director of the famous director of Bengal, he called me to play a role of a Kashmiri chap in his film Tushar Tirtha Amarnath, in Bengali film. At that time I was in Mumbai. All right. He called me there and selected me for that role and called me to Kolkata. I came to Kolkata and started working with him in that film. With him, for that film, I went to Kashmir also. Rehana Sultana was my sister. She was elected the role of my sister. And I did my shooting there in Kashmir. I went to Amarnath cave. At that age, it was I feel very much lucky that at days I could have gone to that. I have already gone to that cave and all. मैं खुद को महसूस करता हूँ बहुत लकी हूँ कि उस वक्त मैं उसी उम्र में अमरनाथ की केव में जा सका. में जा घुसकर आपने एक्सपीरियंस किया. And that way I am lucky. In Bengali film 2-3 films I have done. You have done 2-3 films. सर, मैं जानना चाहूँगी, आपने खुद बोला अभी आपको इतना ऑफर्स मिला था बंगाली मूवीज, हिंदी मूवीज से, तो व्हाट मेड यू स्टिक टू योर रूट्स? व्हाट मेड यू स्टिक टू असमिस फिल्म इंडस्ट्री? दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन. I love my birthplace. I love my mother tongue, Assamese. So I thought that I must go back to Assam and do something for the Assamese people, for the Assamese industry, to give my service. ऐसा सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए असम में. मैं जहाँ बढ़ता हूँ, जहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ जाके मैं कुछ करना चाहिए, ये फर्ज बनता है मेरा. जी जरूर. इसीलिए मैं असम चला आया. असम आने के बाद इतने फिल्मों में काम मिला कि वक्त ही बहुत कम हो गया था. रेस्ट करने के लिए वक्त नहीं मिला. एक जमाना था 2 शिफ्ट मैंने किया करता था. एक ही असम में सुबह एक शिफ्ट करता था, दूसरा दोपहर से रात तक 10 बजे तक एक शिफ्ट करता था. ऐसे ही मैंने बिजी था. इसलिए आई वाज सो हैप्पी इन दैट वे एंड आई लकी आल्सो इन दैट वे दैट आई कुड डू दैट टाइप ऑफ फिल्म in those days in Assam. आपको इसलिए कभी भी वो महसूस नहीं हुआ कि मुझे बॉलीवुड पे जाना चाहिए? मुझे ये कभी महसूस नहीं होता है. अगर मैं बॉम्बे में रहूँ, वो बात अलग है कि फेम, पैसा वैसा बहुत ज़्यादा मिलते थे वहाँ. अगर मुंबई में मैं रहता था तो असम में जितना मुझे प्रेस्टीज मिला, आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला, वो सब वहाँ नहीं मिलते. जरूर, प्यार ही तो असली चीज वही होता तो है. जिंदगी का सबसे बढ़िया चीज होता है. So moving on to our next question, I have heard Shatrughan Sinha was your classmate in Pune, right? Yeah.
Yeah. So I want to know the experience working with him or staying with him. Any incident you want to share with us? It was very funny, you know, that he was so lovely person. He could mimicry. You are also a mimic? I'm not that expert. Okay. तो शत्रुघ्न सिन्हा इतना अच्छा मिमिक्री करते थे कि हम दोनों हॉस्टल जब लास्ट टाइम में हॉस्टल में हम लोग ठहरे तो मैं एक रूम में था, साइड बगल वाले कमरे में शत्रुघ्न सिन्हा वो थे, तो अमीर साहनी के वॉइस निकालते थे वो, जो रेडियो में सिलोन का अमीर साहनी का जो वॉइस है, उस वॉइस से वो अमीर साहनी जैसे बोलते थे वैसे बोलना शुरू करते थे. आई वॉज सरप्राइजिंग हाउ कुड ही गेट द रेडियो हियर. Oh, it was that accurate. That accuracy. तो बहुत फनी लड़का था, अच्छा लड़का था, बहुत करीबी दोस्त था मेरा. He's a very close friend of mine. Still we are friend. जब मिलते थे गले मिलते थे. अभी भी बात करते हैं. अभी भी बात करते हैं. कांटेक्ट है आप लोगों का. कभी भी जब भी मिलते हैं तभी बात करते हैं. एक साथ काम करने का कभी वैसा सोचा नहीं आप लोगों ने? एक फिल्म में काम किया मैंने, दो अनजाने तो अमिताभ बच्चन थे. जग्गू में काम किया था. जग्गू लीला चंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा, उसमें एक रोल किया था उसके साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जी. हम दोनों साथ में किए थे. वाह क्या बात है. तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, यू हैव एक्टेड बोथ इन मूवीज एंड थिएटर्स. My base is in theatre. I have come from the stage. My base is theatre. तो आपको पर्सनली आपको कौन सा मीडियम ज्यादा आपको अच्छा लगता है? Stage, I prefer stage. I like stage. It's a very tough thing. Once you do the scene, you won't get the chance to repeat it again. So in cinema, you can get enough time. So many retakes. But in cinema, we don't get to rehearse. We don't get to time. No, you get time. You know, rehearse for rehearsing. You get, but someday, some people कुछ लोग तो रिहर्सल कराते ही हैं फिल्म के बारे में. वर्कशॉप कराते हैं. अगर फिर भी ऐसे ही शूटिंग के पहले आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है, डायलॉग मिल जाता है, तो डायलॉग रिहर्स करने के लिए आपके पास काफी समय रह जाते हैं, वो कर सकते हैं. यू कैन डू दैट इन दैट टाइम. तो आपके हिसाब से आपको थिएटर मीडियम ज्यादा अच्छा लगता है? थिएटर मीडियम मुझे ज्यादा पसंद करता हूँ मैं. ओके. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिल जाता है ऑडियंस के साथ जो रिएक्शन मिलता है, तभी मालूम पड़ जाता है आप कहाँ तक सक्सेसफुल है, कहाँ तक कर पाते हैं, करते हैं, मालूम पड़ जाता है. सर समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दो पूछने वाली हूँ. सर वो ये है कि what do you feel, what is the difference between your time, that era of SMS cinema and this era, this time? हमारे टाइम में देखिए, those days we have got some beautiful stories and beautiful artists. Today also we have got beautiful artists. Do you think today we have not good stories? Stories, nowadays story you don't find in film. According to you? Yes, according to my. There's some films just gimmick. They wanted to put some gimmick on that film. Story आप इतना अच्छा स्टोरी ठीक से नहीं अब मिलता है फिल्मों में आजकल. हमारे ज़माने में एक कहानी होते थे, वो कहानी के हिसाब से हम लोग फिल्म बनाते हैं. गाने बड़े गाने, अच्छे गाने होते थे. So people liked that film very much. So they could identify themselves with their story. जब एक आदमी खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फिल्म के जरिए, उस कहानी के जरिए, तभी फिल्म सक्सेस होता है. तब कैरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रांग मिलते हैं उस स्टोरी से. कैरेक्टर भी स्ट्रांग मिलता है. कैरेक्टर तो है ही, काफी लोग काफी बड़े गुड स्टोरीज होने से एक्टर्स को भी स्कोप मिल जाता है. बहुत ज्यादा मिलता है. Okay. Sir, मैं पूछना चाहूंगी, what are the changes that should be brought in the Assamese film industry to bring back the glory? देखिए, हमारे यहाँ जो फिल्में बनाते हैं वो फिल्म कहानी होना चाहिए. हमारे खुद का तो बहुत प्रॉब्लम्स है. अपने जो असमीज जो जाति है, हमारा जो घर है, हमारा जो संसार है, खुद का बहुत प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली हमें एकदम बता दीजिए, कौन से प्रॉब्लम्स अगर चेंजेस लाने चाहिए. कितने प्रॉब्लम्स हैं एक फैमिली में, कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. डिवाइड हो जाता है, जॉइंट फैमिली अब नहीं मिलता आजकल. कुछ लोग तो गलत धंधे पे चले जाते हैं,
कितने समस्या So हमारे according to वहाँ you, हो the सकता है। problem is within us, within the society. Yeah, within the society, within your house, within your home, so many problems are there. I hope कि वो glory वो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी, ये जो आंदोलन किया अभी जो सभी लोगों ने इतना बड़ा असम आंदोलन किया, उसके ऊपर तो कहानी अभी तक नहीं बना, कहानी तो बना ही नहीं अभी तक. They could have make a very nice story out of that incident. They could have easily done. Yes, sir. अभी तक तो ये तो मिला ही नहीं. सर, जो मुझे आज पूछना था, मैंने कोशिश किया कि आपसे हर सवाल पूछूं, लेकिन अंत में मैं आपसे 4 छोटे-छोटे रैपिड फायर जैसे क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो. बिल्कुल पूछिए. ओके सर, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? आपने जितने मूवीज किए हैं उनके बीच में सबसे फेवरेट मूवी? ये कहना बड़ा मुश्किल है. फेवरेट मूवी मैं खुद नहीं कह सकता हूँ. ये जो ऑडियंस है उन लोग से पर्सनल मूवी तो होगा? नहीं, पर्सनल फेवरेट मूवी दुरोनी रंग मुझे अच्छा लगा था. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी मेड बाय लेट जॉन्स मोहलिया. माय कैरेक्टर वाज वेरी गुड कैरेक्टर. अंतर्द्वंद जो इसको कहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट. तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बनाया था. सर, फेवरेट कोस्टा? विद्या, मृदुला, राव, इलाका कोटी. नो सर, यू हैव टू टेक वन नेम. You can't be diplomatic. I cannot take one name. All the artists I worked with, I love them all. No, you have to take one name. I cannot do that. Okay, sir. So, what is your favorite song of the movies you have done, all total? Movie song, Duroni Rong, Moya Ji Khongi Bihin. That song was sung by Pulok Banerjee and music given by Ojit Sinha. I like that song very much. So, favorite Assamese ethnic food? My favorite food is fish first. Fish and rice. Okay. Fish tenga, you can say. And Assamese, yeah. And Masor tenga. Masor tenga. And अंत में मैं पूछना चाहूँगी आपसे एक favorite dialogue of your favorite movie. That is the problem, you know, I'm just prepared with that. Anyway, one dialogue from the film Siraj, I am trying to remember it. না যায় বলে হে কলৈ না যায় তাই বলে এখন ঘৰে না যায়. And I forgot the line. So the throwing of your, that is commendable, sir. Thank you very much. Thank you for being so sporty with us. Thank you so much. Okay, lastly, sir, the last question for you. What will be the message you want to give to the young stars who consider you as a role model and wants to be an actor? नहीं, आजकल तो बड़े अच्छे कलाकार, बड़े अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं. मैं देख रहा हूँ. They are very good artists, very talented artists. They should be dedicated to that job. And they should love what they do. जो भी करना चाहते हैं उसको प्यार करना चाहिए उससे. They should love what they want to do. बस यही है. Honesty होना चाहिए. Thank you very much, sir. Thank you for giving your precious and valuable time to us, sir. Thank you very much. Thank you so much.